तो ये आप देख सकते हैं मेफ्लावर शिप का रेप्लिका। हाय, अभी हम आए हैं यहाँ पे प्लायमथ में। अभी हम यहाँ पे प्लायमथ रॉक देखने आए हैं और यहाँ पे एक पिलग्रिम्स के शिप का रेप्लिका भी वहाँ पे किया है, तो अभी हम वो देखने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम वाजपेयी ब्लॉग्स। आज हम आए हैं एक नई डेस्टिनेशन पे जानने कुछ और अमेरिका के और बातें। आज हम आए हैं प्लायमथ। प्लायमथ यूएस हिस्ट्री में बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, क्योंकि यही वो प्लेस है जहाँ से अंग्रेज़ अमेरिका आए थे। जब मैं बोलूँगा अमेरिका आए थे, वो लोग इसी प्लेस से पहली बार अपना फुट अमेरिकन सॉइल पे सेट किया था। तो चलिए देखते हैं प्लायमथ और थोड़ा बहुत प्लायमथ टाउन घूमते हैं और देखते हैं ये टाउन कैसा है। और हाँ, यहाँ पे मेफ्लावर बोल के एक शिप है, जिस शिप में 16th सेंचुरी में अंग्रेज़ अमेरिका आए थे। तो वो शिप का रेप्लिका है, वो भी देखेंगे। और प्लायमथ रॉक जो वर्ल्ड फेमस है, जिस रॉक पे फर्स्ट टाइम इंग्लिश लोगों ने अपना फुट सेट किया था, वो भी हम रॉक देखेंगे। तो चलिए हमारे साथ देखने के लिए प्लायमथ और जानने के लिए अमेरिकन हिस्ट्री। और ये जो अंग्रेज़ आए थे या इंग्लिश लोग आए थे यूरोप से, उनको अमेरिका की हिस्ट्री में पिलग्रिम्स बोल के बोला जाता है। और इन्हीं पिलग्रिम्स ने अमेरिका में थैंक्सगिविंग का ट्रेंड सेट किया था। तो तब से एवरी ईयर 4th थर्सडे ऑफ नवंबर थैंक्सगिविंग मनाया जाता है, जो कि इन पिलग्रिम्स जो यूरोप या इंग्लैंड से आए थे उन्होंने स्टार्ट किया था। तो चलिए और बहुत सारी चीज़ें जानते हैं उनके बारे में, और पहले चल के वो फेमस प्लायमथ का रॉक देखते हैं। चलिए हमारे साथ। ये जो आप मेरे पीछे स्टैचू देख रहे हैं, ये विलियम बेडफोर्ड की है, जो कि प्लायमथ के फर्स्ट गवर्नर थे, जो आए थे इंग्लैंड से और यहाँ पे एक प्लायमथ कॉलोनी बसाई थी। तो उनके याद में यहाँ पे उनकी एक स्टैचू बनाई गई है, विलियम बेडफोर्ड। अगर आप देखोगे और करीब से, तो उनका जन्म हुआ है इंग्लैंड में और उनका जो डेथ हुआ है वो हुआ है न्यू इंग्लैंड में। जी हाँ, न्यू इंग्लैंड। इस एरिया को जहाँ पे हम रहते हैं, अमेरिका का नॉर्थ ईस्ट एरिया, इस एरिया को न्यू इंग्लैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यही वो जगह है, जैसे कि मैंने पहले बताया, इंग्लिश यहाँ पे आए थे। तो इंग्लैंड है यूरोप में, न्यू इंग्लैंड है अमेरिका में। जैसे कि मैंने बताया और आप यहाँ पे देख सकते हैं, विलियम बेडफोर्ड, गवर्नर और हिस्टोरियन, बॉर्न इंग्लैंड 1590, डाइड प्लायमथ न्यू इंग्लैंड। जी हाँ, वेलकम टू न्यू इंग्लैंड। अगर आप यहाँ नीचे देख रहे हैं, जिस बड़ा सा रॉक रखा हुआ है जिस पे लिखा है 1620, ये वही रॉक है जिस पे फर्स्ट टाइम पिलग्रिम्स जो कि इंग्लैंड से आए थे, उन्होंने अपना पैर रखा था। ये एग्जैक्टली प्लायमथ में उसी जगह पे रखा गया है जहाँ पे उनका शिप आके लैंड हुआ था। जैसे कि अभी हमने देखा, वो जो रॉक था जिसके ऊपर 1620 लिखा गया है, ये वही फेमस, वर्ल्ड फेमस पिलग्रिम रॉक है, या जिसे फेमसली प्लायमथ रॉक बोला जाता है, जिस पे
पिलग्रिम्स या इंग्लैंड वालों ने पहली बार अपना फुट सेट किया था। और यही वो जगह है जहाँ से एक अनोखी अमेरिका की शुरुआत हुई थी और यहीं पे अमेरिकन हिस्ट्री की शुरुआत भी हुई थी। तो चलिए और थोड़ी ज़्यादा चीज़ें जानते हैं इस प्लायमथ के बारे में। ये जो आप यहाँ पे रॉक देख रहे हैं, ये प्लायमथ रॉक है और ये 1620 से यहाँ पे है। पिलग्रिम्स ने यहाँ पे अपना फुट पहली बार यूएस सॉइल, अमेरिकन सॉइल पे रखा था। इस रॉक के ऊपर से ये यहाँ पे एंटर हुए थे, इसके लिए ये मेमोरी में यहाँ पे बनाया हुआ है। और इसको अभी लगभग 401 ईयर्स हुए हैं, बहुत ही पुराना है और यहाँ से अमेरिकन हिस्ट्री की शुरुआत पूरी हुई है। तो आप देख सकते हैं ये रॉक। तो जैसे कि हम लोगों ने बताया, आप अगर अमेरिका आए हो और अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो और उस जगह को देखना चाहते हो जहाँ से अमेरिकन हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी और जहाँ से एक नया अमेरिका का शुरुआत हुआ था, जब यूरोपियंस आए थे, इंग्लिश आए थे और खुशहाल अमेरिका की नई नींव बुनी गई थी, वो यही जगह है जिसका नाम है प्लायमथ। मैं इस जगह का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा मैं विकिपीडिया का लिंक भी दे दूँगा, आप उसको भी चेक कर सकते हो और अमेरिकन हिस्ट्री के बारे में और पिलग्रिम्स के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। अभी हम जा रहे हैं वो फेमस मेफ्लावर बोट की तरफ, जिस बोट पे चढ़ के यूरोपियंस या इंग्लिश या पिलग्रिम्स अमेरिका आए थे। ये उसकी एक रेप्लिका है और ये बोट 400 साल पुराना है। तो हम जाके वो रेप्लिका को देखेंगे और जानेंगे कि वो बोट कैसा था और थोड़ी इन्फॉर्मेशन उस बोट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा।
जब आप यहाँ पे आते हैं तो आप शिप पे भी जा सकते हैं, जो मेफ्लावर का एक रेप्लिका रखा हुआ है। शिप पे जाने के लिए आपको $15 पर एडल्ट का एक टिकट लगता है और किड्स के लिए $12 है। और यहाँ पे एक प्लायमथ का म्यूज़ियम भी है जहाँ पे भी आप जा सकते हो, और सबके कॉम्बिनेशन के टिकट्स के रेट यहाँ पे मेरे पीछे दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं। और इसका पर्टिकुलर वीडियो मैं दे दूँगा, उसके एक स्क्रीनशॉट, तो आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, पल्लवी टिकट निकाल रही है, ये देखिए। तो अभी हम चलते हैं ऊपर शिप में। Down below us is the hold. It's where the colonists would have stored food, furniture, tools, supplies, etc. Right down there. Pretty much anything that's not breathing. Right down there. यहाँ के स्टाफ से पूछा कि ये जो जगह है यहाँ पे वो लोग सब नॉन ब्रीदिंग आइटम्स रखते थे, जैसे कि फ्रूट्स हुआ, क्लोथ्स हुआ, सब हुआ, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा जर्नी था जो उन्होंने आए थे इंग्लैंड से लेके यहाँ तक, तो उनके लिए वो सब आइटम्स उन्होंने एक पर्टिकुलर जगह में स्टोर किया हुआ था। और हाँ, उन लोगों ने बहुत सारे बियर भी लाए थे उनके साथ। जब ये पिलग्रिम्स जर्नी कर रहे थे तो वो ये मेफ्लावर शिप पे वो लोग पानी नहीं पीते थे। जी हाँ, वो लोग पानी नहीं पीते थे अपने डिहाइड्रेशन के लिए, वो लोग बियर पीते थे। तो इसलिए जब हम अंदर आ रहे थे, आपने बहुत सारे बड़े बड़े कैन देखे रहेंगे, वो सब कैन में बियर रख के लाए थे। तो वो इंक्लूडिंग उनके छोटे बच्चों को भी वो बियर पिलाते थे, ना ही पानी पिलाते थे। जो कैंस थे वो बड़े बड़े ड्रम्स जो आपने देखे, उन सब में बियर भरा हुआ रहता था और उनमें अल्कोहल कंटेंट बहुत कम रहता था, जो कि इसलिए वो लोग अपने छोटे बच्चों को भी पिलाते थे। अभी आप देख रहे रहेंगे कि मैंने मास्क पहना हुआ है। जी हाँ, यूजुअली यहाँ पे अमेरिका में और मैसाचुसेट्स में मास्क हट गया है पब्लिक प्लेसेस पे, बट हम लोग यहाँ पे एक क्लोज कॉन्फ्रेंस में है, इसलिए मैंने मास्क पहना हुआ है अभी। And what this place was for? Oh, this deck? Yes. This is where all the passengers slept. Okay. All 102. We're pretty sure they also have pigs, chickens, and goats with them as well, that they probably kept all the way to the front. Okay. And what's those? Those spars you would fit into the slots of this capstan right here. This is essentially a crane, where this is the lower half, there's the upper half. You would work it around, and they're using that to raise and lower, say, cargo from the dock down into the hold. Okay.
and they're not trying to get to New England. They're trying to go to the Hudson River, modern day New York City. So their whole plan is you hit the tip of Cape Cod, you go down the coast, pretty easy. The problem is they ended up 2 months late because the second ship supposed to come with them kept leaking. So that delayed them, they eventually left it behind. So when they hit Cape Cod in November instead of September, these outer shoals are too dangerous. So they can't go any further. Master Christopher Jones of the Mayflower essentially tells them find a new place to live, so they start exploring, they look for a new place, and they eventually come across Plymouth. Perfect. Thank you. What we consider to be the first Thanksgiving is a bit of a misnomer. Instead, it is the first harvest that they have. It turns out to be a pretty decent harvest, and keep in mind this is after they lost half the town that first winter. They just made an alliance with the local Wampanoag community, the Pokanoket of Massasoit's people, and the colonists are sort of celebrating a bit of their harvest. Massasoit shows up unannounced with 90 men, and they outnumber the colonists. And so while there, they have this sort of 3-day-long feast of festivities, of it seems games, things like that. And as best as we can tell, this is the only time it happens. The reason why we think of it as a Thanksgiving is because these colonists had what's called days of Thanksgiving. It's a religious thing, and they could do it at any point in time, and it was a day of fasting. A day of fasting, day of prayer. So we kind of merged the two. Christopher रेमी जो इस पर्टिकुलर शिप के बारे में बता रहे थे, जो कि है मेफ्लावर, और ये जो आप डेक देख रहे हैं, ये जो डेक एरिया है, यहाँ पे 102 पैसेंजर्स इसी डेक पे रहते थे। और जैसे कि इससे पहले हमने दिखाया, उनका खाना वगैरह सब नीचे रखा जाता था, और इस डेक पे 102 यात्रीगण रहते थे। और उस 102 या 102 पैसेंजर्स के अलावा 30 to 35 मेंबर्स का क्रू भी था जो ऊपर शिप में काम करता था। तो इन टोटल ये शिप जो 1620 में यहाँ पे लैंड हुई थी, उस पे लगभग 140 लोग आए होते, जैसे कि हम बता सकते हैं। और जब ये लोग आए थे, यहाँ पे रिजेम्बलेंस वो भी है कि जब थैंक्सगिविंग था वो बहुत पर्टिकुलर है, क्योंकि ये जो फर्स्ट हार्वेस्ट था इनका यहीं से स्टार्ट हुआ था, और थैंक्सगिविंग भी स्टार्ट हुआ था, जैसे कि अभी आपने देखा जो यहाँ के स्टाफ थे रमी, उन्होंने बताया। और फर्स्ट ईयर बहुत ख़राब था, और वो लोग यहाँ के विंटर सीज़न के कस्टम नहीं थे, तो 102 पैसेंजर्स तो आए थे, उसमें से लगभग हाफ या 50% लोग उस विंटर को झेल नहीं पाए और वो मर गए। तो उन सब के ब्यूरियल्स अभी यहीं पे है, उसको बुरल हिल कहते हैं। हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम ये शिप देखेंगे, वो देखेंगे, और फिर हम थोड़े बहुत और हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। प्लीज। This is the forecastle, or forecastle as the language calls it, and it's where some of the crew of the ship had their probably 15 or so fellows at the same time. We don't really know. But they wouldn't all be sleeping at the same time. They'd be working 4 hours and then sleeping. So the hammocks and the bunks would be filled all the time, but with different guys. Thank you. Certainly. Oh yeah. This is a big winch for raising heavy cargo on and off the ship. So bars go through the square holes. 8 men rotated around, lines come from different pulleys and go around the base of it. So we might take one of these lines here, wrap it around here, down here. About 4 wraps. One man would hold the line tight. The other men with those bars would rotate it around, and there can be 8 more men added below. So it becomes then a big winch for lifting heavy weights and for raising the sails. Okay. All these lines have to do with, this is the halyard for raising the main yard. These are different devices for working the yards up above. You see the line up there. So it all has to do with this main sail.
And then in this way is the cabin where the officers lived and where the captain lives. Okay. So this cabin is called steerage. There'd be bunks mounted on each wall. There'd be 8 men living in here, 4 sleeping, 4 working, and every 4 hours they switch. This hatchway is called the scuttle hatch. The scuttle hatch is the hatchway from down below. If you were a passenger down below and you were ever allowed above decks, this was the only way up. There's no other opening to below except for this scuttle hatch. This is the compass binnacle. There are no compasses in it right now, but normally there'd be 2 compasses in here. And the man who steers the ship uses this lever called the whipstaff. The open hatchway is where the orders come down for steering. So for instance, perhaps he might shout down hard to starboard, come about 12 points of your compass. So he'd move this lever hard to starboard and he'd watch until the compass comes around 12 points. And that's how the ship is steered. The reason for no ship's wheel is very simple, not invented for another 100 years. So except for the movies or Hollywood, real ships don't have steering wheels until about 1700 or a little later. Yeah. Yep. This is the kind of lantern that would be down below decks. You're living below decks, there's no light down there except candle lanterns, so this would be what the candle lantern might look like. What's interesting about this candle lantern is that this material is sanded cow's horn. They take a cow's horn which is already curved, they sand it down until it gets pretty light. In fact, we could sand this one a little more right now and it would be even a little bit brighter. And then it's fireproof and it won't break, so they can't make glass that's curved anyway. So that would be what their candle lanterns would look like. And that's a picture of Mayflower under sail with the, need to hold that up for you? Yeah. So that's Mayflower under sail with the Coast Guard cutter Eagle. What's nice about this picture is that in 1957, when she sailed from England, partway across, the Eagle caught up to her coming from Europe, and all the cadets lined up and did a big salute when they sailed by, and we got to sail with her again last summer. So pretty nice. Yep. What's interesting too is that the picture, this flag, American flag here, is as big as our mainsail. So she's 279 feet long and we're only 106 feet long. So big difference. Yep. 7 hours a day to get all our permits for sailing. So when you go up above decks and look in the captain's cabin up above, you'll see that all the sailing permits on the left side. Took us a lot of work to get those done. This cabin is the captain or master's cabin in 1620. So this is the cabin where Christopher Jones, the ship's master, lived. There'd be bunk mounted on the wall in here. The table is for his meals and his officers' meetings. And he would have maybe a couple of chests in here for his clothing. It would be set up any way he wanted to. It's his ship and it's his cabin. Yeah. It's officially called the Great Cabin, but on Mayflower, it's Master Jones's cabin. Deck is going to be like the command deck pretty much. So where the navigation is being done is up here. So it's kind of like a breakdown to where the deckhands are the ones that are working with the lines. They're going up the rigging and they're the ones actually steering that whipstaff down there. But they're not really going to be the person that's in charge of navigating. That's going to be your officers who have more training. So this deck will really be where the officers are. The deckhands, if they need to work with the lines on the belaying pens here for the sails, they can be called up. But otherwise, what they're doing up here is giving commands to the person at the whipstaff down there. So you can see this hatch is going to be the opening between the decks for this navigator, basically to shout at the helmsman down there, you know, however many points in whatever direction he needs to go with that whipstaff. So yeah, they have a compass in the 17th century, so they're communicating in the directions on the compass as well as the points that lie in beneath, or in between, I should say, the cardinal points. But aside from that, really what there is to see is another cabin back here called the roundhouse. So, you know, if the cabin down there, the great cabin, that might be housing your officers. We believe the captain or the master could have stayed down there, but it also makes sense that he could be here as well. We're just not entirely sure from the sources we have which room he uses.
But it could be a navigator's office too, because this is where they're navigating after all. So they might keep their maps, compass, charts, and tools in this room right here. And what's this bell? So the bell is going to be like the basic alarm. They might use it as a way to signal that it's time for the sailors to shift off, like change off their shifts, I should say. But they could use it, you know, for signaling mealtime, or even if they need to call all hands on deck, really, they'll ring the bell. It's multi-purpose. Okay. Basically, it's just going to get your attention because it's really loud. Okay. So you don't ring the bell? No, it's really loud, and every young little one that came on would probably want to ring it until your ears were deaf. So, unfortunately, no. But it can ring when it's not all tied up. It's actually only 2 years old. They cast it in our museum parking lot in 2019. The old one is a perfect one. जैसे कि फ्रेंड्स अभी हमने टूर लिया मेफ्लावर रेप्लिका का, जो कि 1955 में बनाया गया था। मैंने उनको पूछा, जो गाइड थे यहाँ पे जो हमको एक्सप्लेन कर रहे थे, जो आपने वीडियो में भी देखा, उन्होंने एक्सप्लेन किया पूरे शिप के बारे में। और लास्ट में जब मैडी ने एक्सप्लेन किया तो मैडी को मैंने पूछा जो ओरिजिनल शिप था जो 1620 में आया था यहाँ पे, वो क्या वापस यूरोप या इंग्लैंड चले गया? उसने बोला जी हाँ, कि वो वापस नए 1650s में वापस वो सेल करके इंग्लैंड चला गया और कभी वापस नहीं आया। और ये जो पर्टिकुलर बोट है, ये उस मेफ्लावर की याद में एक रेप्लिका बनाया गया है और इसको मेफ्लावर 2 बोल के बोलते हैं। और जैसे कि हमने एक डेक देखा, अलग अलग हिस्से हैं डेक के। सबसे निचले हिस्से में जैसे कि पहले देखा तो उसमें उन लोग सब खाना वगैरह रखा करते थे। और ऊपर के डेक में जो एक बहुत बड़ा डेक था, उसमें तकरीबन 102 यात्रीगण रहते थे, या कि पिलग्रिम्स रहते थे, पैसेंजर्स। और उसी के बगल में आपने देखा कि कैप्टन का कैबिन भी था। और जैसे कि हम ऊपर के कैबिन में गए या फ्लोर पे गए, वहाँ पे जो है सब क्रू काम करता था। और सबसे ऊपर जब डेक पे हम गए, वहाँ पे वो लोग बताते हैं कि वो कैप्टन का डेक था। और तो फ्रेंड्स, अभी हम ठहरे हैं इस स्टैचू के सामने। ये स्टैचू है जो रियल अमेरिकन्स थे, जिनको इंडियंस बोला करते थे, उनके यहाँ के ग्रुप के लीडर की, उसका नाम है मैसासोइक। ये वही इंसान है जब पिलग्रिम्स 1620s में यहाँ पे आए और उनको यहाँ के कंडीशन के बारे में पता नहीं था, इन्होंने ही उनको सहारा दिया था और यहाँ के क्लाइमेट के बारे में और कैसे उसको हम लोग रह सकते हैं उन कंडीशन के बारे में। तो इन्होंने उनको बता के उनको यहाँ पे ये सुंदर सा कॉलोनी बसा के दिया था। तो
ये उनके याद में यहाँ पे उनका स्टैचू बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था प्लाइमथ रॉक और मेफ्लावर 2 का आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारी चैनल को, जिसका नाम है गौतम वाजपेयी ब्लॉग्स। इसी तरह अमेरिका का और एक डेस्टिनेशन लेके आपके सामने बहुत ही जल्दी आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।